Teacher says, find 1 plus 2 plus 3 square. How can we find? There are more manners. इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के. पहला क्या है? पहला हमारे पास 1 plus 2 plus 3 होल स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो 3 plus 3 होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 6 होल स्क्वायर. ओके, दैट विल बी 36. मतलब ये क्या आएगा? ये आएगा 36. ये था हमारे पास पहला तरीका. दूसरा तरीका क्या? सेकंड वे इज 1 plus 2 plus 3 whole square. Okay, then that will be 1 plus 5 whole square, and applying by using a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. By using this formula, is this appearing? हो रहा है. ठीक है, एक मिनट. Okay, then what will happen? 1 square plus 25 and plus 5 on the 5 to the 10, then that will be 36. This is the second manner. And third one is 1 plus 2 plus 3 whole square, then that will be 3 plus 3 whole square, and that is 3 square plus 3 square plus 3 3 9 9 to the 18. Okay, then that will be 9 plus 9 plus 18 36. This is the second manner. Third manner. Fourth manner is 1 plus 2 plus 3 whole square, then that will be 2 plus 4 whole square, that is 2 square plus 4 square plus में 2 into 4 into 2. Okay, and 4 plus 16 and 2 to the 4 4 is 16 32 4 36. This is the fourth manner. चौथा तरीका. Fifth manner is, पांचवा तरीका है 1 plus 2 plus 3 whole square, that by applying x plus y plus z whole square formula, then we will get 1 square plus 2 square plus 3 square plus 2 into 1 into 2 plus 2 into 3 and plus 2 into 1 into 3. Solve them. 1 plus 4 plus 9 and 2 to the 4 and 2 to the 4 4 3 the 12 and 2 1 the 2 and 2 3 the 6. What will happen? 6, that will be 36. छठा तरीका मतलब सिक्स्थ मैनर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 6 स्क्वायर. ओके, और वी कैन राइट 7 minus 1. We can write 7 minus 1 whole square, and by using formula a minus b whole square, then what will be the formula? Is equals to a square plus b square. A minus b whole square is equals to a square minus b square and minus 2ab. By using this formula, then we will get 7 square plus 1 minus 2 into 7 into 1. Solve this, and that will be 49 plus 1 and minus 2 7 the 14. Then what will happen? That will be 36. सातवां तरीका, सेवंथ मैनर. 1 plus 2 plus 3 whole square, that is 6 whole square, and we can write this 10 minus 4 whole square by applying a minus b whole square formula. a minus b के whole square वाला formula अप्लाई करके आ जाएगा 10 square plus 4 square minus 10 4 the 2 10 and 4. Solve this. 100 plus 16 minus 80.
that will 36, that will 36. Okay. 8th मैनर, 8वां तरीका क्या हो सकता है? 1 + 2 + 3 होल स्क्वायर, that will be 6 होल स्क्वायर, and that is, can we write 6 in 2 terms like 2 into 3, मतलब 6 को हम 2 क्रॉस 3 के वे में लिख सकते हैं, बिल्कुल. देन बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, that will be 2 square, that will 2 square and into 3 square. Then we will get the answer 4 into 3 3 is 9, that is 36. 9th manner, 9वां तरीका, that will be 1 + 2 + 3 whole square, that will be 6 whole square, and can we write 6 into 2 into square root of 36, मतलब 6 को हम 36 के स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं. ओके, देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा, सॉरी, और कटने के बाद ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 36. एक ये तरीका है. एंड नाउ इज लेजेंड वे, ये लेजेंड तरीका है. लेजेंड स्टूडेंट्स, legend student says 1 plus 2 plus 3 whole square, and legend student what says? He says 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. How? Plus 3 cube. How? That will 1 plus 8 plus 27, and add them, that will be 36. Wow, what a legend way.